Yes, slide is visible, madam. स्क्रॉल करना, यस स्क्रॉल हो रहा है मैडम. मिस मनीषा मैम एक बार चेक कर लीजिए, एक बार शेयर कीजिए एक बार पीपीटी. तुम्हारे पास वो 11 की लिस्ट है ना पार्टिसिपेंट्स की, करिश्मा? अच्छा, सारे के सारे आ गए कि कोई ड्रॉप आउट हुआ है उसमें से? जगदीश और राजेश नहीं आए, ठीक है. अब जो और 10 मिनट में नहीं आएंगे ना, फिर हम उनको नहीं ज्वाइन करवाएंगे. मतलब कोशिश यही रहेगी. अब आ गए. अरे तुमने अच्छा वो तो मुझे लगा ये पार्टिसिपेंट्स की बात करें. नहीं, वो तो आ जाए, वो तो भैया वो तो आएंगे 10 मिनट पहले. भाई म्यूट में हमारे को म्यूट में करो भाई, म्यूट में करिए. नहीं श्रीनिवास सर. Yeah, morning Sonal. Can you see me and hear me? Good morning, sir. I can see you and hear you as well. Good. And So, very warm welcome. And I hope we have a very fruitful session. thank you. I look forward to it. Sir, thanks, sir. Good morning, ma'am. I am Sandeep Patnaik. Am I audible to you? Yes, absolutely audible. Sonal ma'am, I think I'm able to share it now. Are you able to see it? Yes, we are able. Yes, we are able to see it perfectly. You can just run Yes. the whole PPT. Please run the whole PPT Yes, if you ma'am. want. Yes, We can able. yes. We are able to see it. Yes. ठीक है. हाँ ठीक है, बढ़िया मैम, बहुत अच्छा. थैंक्स. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, once you want to stop, just simply click on the stop. I am there only. Don't worry. You start करती हूँ. हाँ, so अभी मैंने आपका वीडियो भी बंद करके रखा है. हाँ. म्यूट पे कर दीजिएगा. अरे Sonal, what is my sequence? I'm speaking after whom? You are. Sonal, you are on mute. Yes, ma'am. We are beginning with the chairperson, Professor M. Jagadish Kumar ji. Then we are having Rajesh Agarwal, Additional Secretary, Department of Commerce. Then followed by Shri Rahul Bharti, ED Maruti Suzuki Limited. Then we have Shri Injeti Srinivas, Chairperson IFSCA. Then we have Dr. Vikas Chandra, Head CSR. Then ma'am आप हैं और then lastly we have Shri Ashutosh Gupta ji, Country Manager, LinkedIn. So I'm number 6. You are number 6, ma'am. Number 5 in the panelist, number 6 in the overall sequence. Okay, fine. जी ma'am. Mr. Vikas is done. Once Mr. Vikas is done, then it is my turn, right?
Yes, ma'am, absolutely. Once Dr. Vikas Chandra finishes, I will introduce you, ma'am. Then, secondly, Sonal, just about the pointers, I just had a quick glance in the morning. I think the most of the things are only from the government perspective and basically GOI perspective. So just to get, elicit the participation of most people, and we have majority of industry panelists. So I would request you, without bothering for the, too much of prior kind of preparation or calibration, you can just give some extempore questions to them right now, one or two or three, because there is absolutely hardly anything, and those things that you have sent pretty overlap, or otherwise, you will be the best person to answer on behalf of GOI, because there is hardly anything, because many of these things are very pertaining, very typical to GOI about different initiatives of GOI. I think just to get, we have Maruti person, we have ArcelorMittal, we have LinkedIn. I think some specific questions where they can also, participate in the panel. I think that would be very enriching for the panel also. Yes, ma'am. Ma'am, I think we all were there in the plenary session when Honorable Prime Minister gave his inaugural address, and the focus on kaushal or shiksha, and how are we going to reorient this for the current coming times. And when he said about skill, he said ki from the high end courses to the last mile, which means the Paramparik Karigar, Textile, PM Vishwakarma Yojna. So I think these are the pointers for the industry, whether it is high end, whether it is incubation, whether it is R&D, and especially he mentioned about civil aviation, tourism, the services sector. He talked about digital inclusion a lot, and then up to the last mile. So whether it is MSME, whether it is the traditional art and craft, whether it is the Vishwakarma, which we call in India the traditional artist, the old arts, the dying arts. So I think Honorable Prime Minister has clearly set the tone that when we talk about skilling, skilling will hold a very huge spectrum, and industries have to come in a big way to sustain this effort, ma'am. So I think this is all, and rest I think we had sent you the notes and everything, ma'am. And I think industries can share their own inputs, and the participants also will bring forth their initiatives, their suggestions, and possibly then we can take it forward. So I have a request, Sonal, then, because the questions are all about what is the government thinking, what is the government doing type of things. So what you can probably say also that, share the kind of, instead of directing only to one person, any of the panelists, you could probably give an opportunity for other co-panelists also to chip in, or to take, anyone can take the question. And maybe you yourself representing GUI can also give that perspective. I think that would be more, because, yeah, that's all I Yes, wanted to ma'am. say. Yes, ma'am. I And hadn't also, looked ma'am, at it. yes, ma'am, because maybe the questions are kind of drafted in a way, but it is always open before the participants also to share their side. If they are industry partners, they can share their take also. If they have certain suggestions to make, they are free to make that suggestion. And same from government perspective, if a state wishes to make a suggestion, they are free to make those suggestions. They can highlight their best practices, and they can always nudge us also possibly to take certain initiatives based on many of the state experiences, ma'am. Yeah, thanks. And my other request was, instead of we justifying why we are talking in English, probably you can say in the beginning upfront as moderator that I would request the panelists to, also kind of keeping in view the interest of South Indian states and Northeast, to kind of give a mixed kind of thing if possible. Because in the morning session also, everybody was speaking just in Hindi. So I was wondering, whether what would be the right. मुझे लगता है हम लोग हिंदी, जैसा मैंने ब्रीफिंग में भी रिक्वेस्ट किया था, एक हिंदी इंग्लिश का मिक्स रखते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी और रिसेप्टेबिलिटी बेहतर रहेगी.
मैं भी जब अपना उद्बोधन दूंगी तो मैं मिक्स में ही रखूंगी, तो ये मैसेज मैम पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स को भी चला जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या अनम्यूट कर देना। Madam, you're muted. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण स्किल्स फोकस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्थव्यवस्था के द्वारा देश की तेजी से बढ़ती कामकाजी जनसंख्या को और Is the sound audible for the movie? Yes, it is. Yes, ma'am. yes, it is. It is. Yes, yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. गणेश जी यहाँ से म्यूट करिए और अब You were able to see, Sonal, the changes? Yes, ma'am. Visible. फिर रुक गया। नहीं, हाँ, करिए, पर अब जब आपका खत्म हो जाए तो ये स्टॉप हो नहीं, अभी कर हम ही हैं, लेकिन थोड़ा अगर कुछ हुआ कंफ्यूजन तो ठीक है। नाउ आपके वीडियो और म्यूट सब बंद है अभी, जैसे Just a small question to the moderator, madam. जी Yes, sir. Would you go over a single round, or would the panel be structured around, let's say, multiple rounds of discussion with the panelists? Bharti ji, what we had thought of and what we had even deliberated during the briefing was that we will only go, we will go one by one, and once we are, because for a whole 1 hour we are devoting for the questions from the participants. So Okay. once the questions are posed, I will just request one of the panelists, but I will also keep it open that I would also request the esteemed panel
to contribute when the questions are asked. Okay. Okay. So maybe So- you can unmute and you can get going if you wish to add to any of the questions. So that will make it more interactive. Interesting. So, in terms of time duration, it's, pardon my ignorance, in terms of time duration, it runs into 2 hours. It in terms of time, and a it half. runs into 2 hours, 11:30 to 1:30. But we will try and begin by 11:25 since all of you are connected. So once the chairman sir comes, we will try and begin. Okay. So And, that yes. So in the beginning, I mean, you go over one by one with the panelists, and then you open the floor to questions from participants. Is Yes, that how yes, 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 yes. But again, Bharti ji, if maybe at all, if you so desire that if you feel for just giving example, if maybe something is being talked about the digital economy or the budget, how it is focusing on the digital aspect or the emerging technology or the emerging sector or the foreign investment, if you so wish that yes, during the panel discussion itself, you wish to maybe add something, I think आप लोग ने कर चुके हैं कई बार you can obviously just chip in and add your because you heard the honorable prime minister. It has to be a deliberative, we need to deliberate because at the end of this I have to submit a report on what inputs I am getting. So अरे सोनल तुम ना तुम्हारा सर ही सर दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रही हो, ज्यादा जूम इन हो गई हो. नहीं ठीक हो जाएगा. गणेश जी क्या करवा रहे हो भाई. You are not visible, only your hair are visible. Okay. गणेश जी क्यों कर रहे हो जूम इन जूम आउट. अभी तक तो सब ठीक है, क्या कर रहे हो भाई. रुक जाओ ना. देखो तुमने क्या किया है, कहाँ से ऐसा किसने प्रेस कर दिया. हाँ मैडम आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही? और पीछे करो, झंडा नहीं आ रहा. एक मिनट एक काम करो, ये वाला झंडा थोड़ा सा आगे करो. आपने शायद अटेंडीज को भी इसी में ले लिया है ना, इतने सारे लोग दिख रहे हैं. There are only 6 of us who are panelists. Sonal, you have let in all the people, attendees also from the same link. It seems it is not just the panelists. Everybody can be seen here.
मेरा वीडियो चालू है ना? हाँ। आप एक बार सारे पैनलिस्ट का ग्रिड बना दीजिए. Sir, we are only waiting for Rajesh Agarwal, sir. Another 2 minutes for him. And very good morning and a very warm welcome to all my esteemed panelists, and Honorable Chairman sir also is here, and I welcome him from my whole team, sir. Thank you, Sanaji. Let the other experts also join and Sir. we'll say hello to everybody. Of course, generally what happens is if we have physical mode webinars, even before the webinar starts, we meet each other, talk to each other, exchange notes. And somehow on online webinars, it seems a bit awkward to do that because we cannot talk to each other individually. So when a single person talks, it is addressed to everybody, so that may look a little bit awkward. We may not talk to each other. So true, so true. हुआ सर का सॉर्ट आउट हुआ? हाँ सर, यहाँ सर आपका इज दिस नहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं. हुआ सर का? सर कर रहे हैं. sketch pen black color. जी सर, जी सर, जी सर, जी सर. हाँ हाँ. हमें पता चलेगा कि कितने लोग YouTube पे हैं. रमेश बाबू जी, इस सेकंड सेशन के लिए कितने लोग YouTube पे हैं, पता चलेगा? वही करने वाला हूँ, लेकिन वो देखने से अच्छा है कि ये समझ में आ जाता है. हुआ सर का? उनका आया YouTube का? अरे उनका कुछ आया WhatsApp? कितना व्यूज हमारे सेशन का कि पहले का? अभी का? चलिए कितना? चलिए हुआ? नहीं, उसके जस्ट ऊपर उनको लिंक पता है ना? says 4.8K views. Right. इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए ना. हाँ, और स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप पे भी डाल दीजिए, तो एटलीस्ट हाँ थोड़ा सा मैसेज जाएगा. हाँ, इसमें सेशन 4 की लिंक होगी सर. हाँ, वो खोल लीजिए आप. यस सर, सेम. हुआ? मैं बात करूँगा. हाँ, वेबएक्स पे सर.
इनका ऑफिस है कि कौन? नहीं सर, ये वेबएक्स लिंक है, मैं बात करूंगा। इनका ऑफिस है? सर से ही बात कर। Yes, same sir. I'm talking. हो गया, भेज दिया है। हाँ, Got it, sir? Yes, आ गया। Thank you so much. आ गया। हाँ, done. चलो गुड, अब आप लोग बैठ जाए। थैंक्स, वी आर ऑन टाइम। सही बात है। ये नीचे है ना, दिख रहा है नीचे, आर में देखिए, ये है। हाँ हाँ, बस आ गया ना। हाँ, हाँ, आ गया। yes, so begin. So namaskar and a very warm welcome to all my esteemed panelists, and also to the huge number of stakeholders, especially youth, who are watching us live from across the length and breadth of the country. This webinar is on implementation of budget 2023 for skill and education sector, and this is a breakout session number 4, which would be focusing the deliberation on promoting apprenticeship as school to work transition. आज हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुबह के उद्बोधन में सुना था, और जिस तरह से इस बार के बजट ने युवाओं पे फोकस किया है, उसके लिए शिक्षा और कौशल दो सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तुएं हैं। आज हमारे पैनल पे बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी हमारे चेयरपर्सन सर का, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, चेयरमैन यूजीसी, श्री राजेश अग्रवाल सर, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री राहुल भारती, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन, जापान इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मारुति सुजुकी लिमिटेड, श्री एनजेटी श्रीनिवास, चेयरपर्सन IFSCA, गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात, डॉक्टर विकास चंद्र, हेड CSR, आर्सिलर मित्तल निप्पन स्टील लिमिटेड, श्रीमती मनीषा वर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और श्री आशुतोष गुप्ता, कंट्री मैनेजर लिंक्डइन। तो इस वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक छोटी मूवी बनाई है, जिससे कि स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप के इकोसिस्टम का हमको संजान आ जाएगा। कैन वी हैव द मूवी प्लीज? अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण। अमृत काल में आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाना मात्र एक स्वप्न नहीं है, ये वो दृढ़ संकल्प है जिसकी ओर पूर्ण दूरदर्शिता और सही रणनीतियों के साथ बढ़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में 2023-24 का केंद्रीय बजट इसी नीतिबद्ध योजना की ओर एक बड़ा कदम है। अमृत काल की अमृत पीढ़ी का बजट भारत सरकार की नॉलेज बेस्ड,
स्किल्स फोकस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्थव्यवस्था के द्वारा देश की तेजी से बढ़ती कामकाजी जनसंख्या को और सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5G, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की बढ़ती मांग के इस दौर में हमारे युवाओं के सामर्थ्य को समर्थ बनाने और दुनिया के लिए एक बड़े कुशल कार्यबल का निर्माण भारत में ही करने के लिए बजट 2023-24 युवा शक्ति की अमृत पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई के अगले चरण में आने वाले 3 वर्षों में अमृत पीढ़ी के कौशल के रीस्किल एंड अपस्किल पर ध्यान देते हुए प्रशिक्षण से लेकर उद्योग साझेदारी व नौकरी के दौरान प्रशिक्षण की कौशल जरूरतों को पूरा करेगी। सीमांत समूहों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ होगी। इसी के चलते देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर SIIC स्थापित किए जाएंगे ताकि आकांक्षी भारतीयों को डिमांड ड्रिवन वैश्विक अवसरों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में ये केंद्र उम्मीदवारों का मार्गदर्शन, शिक्षा, प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणीकरण करेंगे। बजट 2023-24 की महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक है स्किल इंडिया डिजिटल, एक सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य एक कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता का इकोसिस्टम बनाना है, जिसमें डिजिटली वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स के द्वारा हर नियोक्ता की होगी अपनी कौशल पहचान। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास के एक पसंदीदा मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए बजट 2023-24 में एक पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 47 लाख युवाओं के लिए स्टाइपेंड देने की भी घोषणा की गई है। आज देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हों। राष्ट्रीय और वैश्विक मांग के लिए अपने कार्यबल को कुशल बनाने के लिए और भारत को ग्लोबल स्किल कैपिटल बनाने के प्रयास में केंद्रीय बजट 2023-24 एक सार्थक प्रयास है। भारत के अमृत काल की अमृत पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को संवारने का और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का। Welcome back. Now I will just be running few pointers so that those can become the area of deliberation and beyond also. Next. This is the esteemed panel. So once the honorable panelists come, I will introduce them individually. Next. The focus of the budget announcement, the vision of the Amrit Kal is Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas. The Saptarishi, which is the 7th priority, and as may be appreciated, youth power is the priority, and all the other aspects also are covering the youth power. And the announcement which is made in the budget is to provide stipend support to 47 lakh youth in 3 years and direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Next. The achievements which have been undertaken in the scheme is on the slide. It has really initiated and throttled the number of apprentices since the scheme was launched in 2016. Also, inclusive indication has come up in a big way, especially for women and the marginalized section. Their participation is quite in number now. And onboarding of scheme industries in the ecosystem. And it was also because of the fact that a lot of optional trades were introduced by the industries themselves. Next. So we have just tried to indicate certain discussion areas, and the esteemed panelist can also add on
the inputs which they can offer from the industry's perspective, which from the state perspective, and from the academia perspective. So we have tried to indicate sabka saath sabka prayas, and offering flexibility and ease of doing business to increase greater participation of state and industries to engage the apprentices, the DBT as a game changer in the ecosystem, and India at 100, and especially focusing on the economic empowerment of women, traditional artisans, tourism, and green growth. So now I would take this opportunity of heartily welcoming भारत के अमृत काल में अमृत पीढ़ी का ये जो बजट बना है, उसके सम्मानीय चेयरपर्सन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी का मैं सभी के द्वारा स्वागत करती हूं। Sir is an academician, administrator, and author, and chairman of UGC since February 22. Sir did his master's and PhD in electrical engineering from Indian Institute of Technology, Madras, followed by postdoctoral research at University of Waterloo, Canada. His works in the area of nanoscience and nanotechnology is well recognized. I welcome you, sir, and we would like to have your inputs. Sir. Thank you, Sonalji. Let me also welcome all the panelists and the viewers who are watching this live from across India. Taking a lead from what the Honorable Prime Minister has said, we have set certain goals for ourselves during this Amrit Kal to build an empowered and inclusive India. And these goals can be achieved only when all of us work collectively. Especially the focus is on youth. You might have noticed that when we began our G20 presidency on 1st December 2022, we began with a University Connect program. That is the first program that we had where we contacted thousands of students from across the country and hundreds of universities. And that shows the importance our country gives to our youth. Now, one of the goals that we have set for ourselves, and which is the main theme of our discussion for this panel, is providing apprenticeship support to 47 lakh youth as part of the National Apprenticeship Promotion Scheme. And this is a big goal for ourselves. Since many of the participants in this program who are watching this program are youngsters, let me provide you a brief background on why this goal that we have set for ourselves is very, very important. You know, India is expected to become the most populous country maybe by next year or so. And the labor force in India is a little over 520 million. And more than half of it is in the non-farm sector. And therefore, they come under the Ministry of Skill Development and the Entrepreneurship. Indian labor force is also the second largest in the world. But however, as the Indian economy is growing, today we are the 5th largest and soon we will become 3rd largest. It is possible that a large portion of this labor force will migrate from agriculture to secondary and tertiary sectors. When such a large migration happens, there is bound to be a large skill gap. And another challenge that we face is that the large number of students who are enrolled in schools, colleges, and universities, today we have close to about 300 million students from class 1 to PhD level, and about 41 million students
in the higher educational institutions. While there are huge numbers in the general education in the schools, colleges, and the universities, we have fewer number of students who are enrolling in ITI and ITC, Industrial Training Institutes and Industrial Training Centers. This is around 1 million of that order. But if so many, where are these students going if we have only 41 million students in the higher education, whereas in the school level, we have several hundreds of million students? Obviously, many of them are dropping out of the school, or even after they complete the school, they do not have the required skills to find employment for them. So this is where I think we need to do a great deal in providing skills to our students so that our youth will become job ready. Apprenticeship, of course, is a traditionally it is used to provide skills to the youth. Here training is provided by an employer by engaging a person as an apprentice, and then they are provided systematic training in a designated trade for a given period. To make the apprenticeship popular, we have been making consistent efforts to make it more accessible to the youth and to make it more popular. We, of course, brought the Apprenticeship Act in 1961. The major objectives of this act was to regulate the apprenticeship training so that it conforms with the prescribed syllabus and duration and other requirements as laid down by the respective councils, and also to fully utilize the facilities that are available in the industry to impart the training to the youth. There have been several modifications to the Apprenticeship Act to take into the concerns of the employers, industry, students, and different state governments. But in spite of these amendments, in spite of our several efforts, we still need to cover a lot of ground to see that employer participation increases and the school leaving students are trained suitably to find employment. And what are the strategies that we need to work out in order to make apprenticeship as popular, as inclusive as possible? And today we have very eminent panelists here to discuss and provide some insights on what kind of strategies we can develop to empower our youth. So I would like to put a couple of issues on which we can deliberate. For example, how to link our secondary education, particularly the vocational and technical education, to the needs, to meet the needs of the labor market. This is something that we need to deliberate, and how to improve the access and equity by targeting out of the school children. We need to have a targeted approach for this, and how to expand the number of apprenticeship programs. And then we also need to provide pre-vocational training to the students in the secondary education itself, while they are in the school itself. Can we integrate this in the school education? And then how to bring convergence among various vocational programs that are being conducted by various ministries, industries, private institutions, and vocational educational institutes. We all need to sit across the table and bring more convergence. And more importantly, we also need to look at training the trainers. If we want to provide good quality skill education and apprenticeship to our students. And UGC, of course, is working on how to integrate skill education as part of the regular academic programs with the help of industry. So what more can be done here to make skill education as part of the education in the colleges and the schools? How to make apprenticeship a vehicle of social inclusion, especially from
the students who come from the socially and economically disadvantaged groups. We need to develop a strategic plan to increase employer participation in these apprenticeship programs by making apprenticeship more attractive to the employers. We all know that employers would benefit collectively if there is increased workforce training, but the individual employers may not show as much enthusiasm. So this acts as a barrier. And how to minimize this barrier? This is something for us to discuss. And lastly, how to remove this perception of apprenticeship as a low status option for school dropouts. We need to involve social scientists here, psychologists, even philosophers to make sure that our perception changes, that every work, every job that we do is important and that needs to be given respect in society, and how to provide seamless migration of students from tertiary education to skill education and vocational education and back and forth. You might have recently seen the announcement of the National Credit Framework, which acts as a foundation on which we have three verticals. The first vertical is the National School Framework, and the second vertical is the National Higher Education Framework, and the third one is the National Vocational Education Framework. And we have also designed this credit framework in such a way that the students can seamlessly migrate from one level to the other level. 0 to 4 levels are defined for school education, and 4.5 to 8 are defined for higher education and skill and vocational education. Based on their learning outcomes, the students can easily migrate back and forth between general education, skill education, and vocational education. And we are also integrating internships and apprenticeships as part of the general education as mandatory part of their education. So there is a great deal of things that we need to do. Of course, we have the conventional skills such as welding, plumbing, and so many other conventional skills. But we also have emerging technical skills such as the web design, data analytics, even medical equipment operation and their maintenance, fintech, drone technology, and so many. As the Honorable Prime Minister has said, we are now working on establishing a national digital university, and many emerging skill-related programs will be made available in this national digital university. And our goal is to reach out to crores of our students who are in the remote parts and the rural areas of our country to enable them with skills so that they become the panel discussion. And each panelist may take about 7 to 8 minutes and give their suggestions and ideas on how we can make this apprenticeship program a popular and attractive scheme for the youth of India. Thank you so much, sir. Your very visionary and very in-depth analysis of how to make apprenticeship both a win-win method, win-win solution for the industries and the students and the academia. I think this will go a long way in setting the tone for the discussions further. So thank you, sir. Thank you once again. I would now invite Rajesh Agarwal, sir, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Shri Rajesh Agarwal is an Indian Administrative Service Officer of 1994 batch, Manipur cadre, and has immense exposure and contributed in a big way as Joint Secretary in the Skills in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for nearly 5 years. He has also served in the roles of Executive Director, Indian Trade Promotion Organization,
and also as the Chief Electoral Officer for Manipur with the Election Commission of India. I welcome you, sir, and your expertise in the area of skills. We all are very eagerly looking forward to have your input, sir. Thank you very much, Sonal. Thank you, Chairman. Good afternoon, all the panelists. Good afternoon, all the listeners. First of all, as truly pointed out, this is the era of India. This is the Amrit Kal, which every country looks forward to. अगले 25 साल हमारे देश में भी, I think युवा population जो रहेगी, we are the country, world's only country which will have maximum people in working age population for next 25 years. And this is our opportunity. ये हमारे 25 साल हैं जिसपे अगर हम लोग सब साथ मिलकर काम करें तो देश जो हमारे प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है, जो एक विजन उन्होंने हम लोग के सामने रखा है, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात है अप्रेंटिसशिप की। जब हम लोग बात करते हैं तो अप्रेंटिसशिप ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे देश में नया है। मेरा मानना है हम लोग तो प्राचीन काल से ही अप्रेंटिसशिप को एक, हमारी जो गुरुकुल की व्यवस्था थी उसमें आप अगर देखेंगे शिक्षा और कौशल साथ ही चलता था, तो एक व्यवस्था में साथ ही चलता था। उसके बाद हमारे जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल सिस्टम आए उसमें भी आप देखेंगे कि अप्रेंटिसशिप वाज इनहेरेंट इन पार्ट ऑफ एनी फैमिली. Everybody was getting apprenticeship in a family, and that's why occupations were also hereditary in our society. Slowly, with advent of more technology, more industrialization, when ये सारी ऑक्यूपेशन के ऑप्शंस लोगों के लाइफ में बढ़ने लगे, आकांक्षाएं भी बढ़ने लगी, हम लोग नए नए ऑक्यूपेशंस की तरफ भी देखने लगे, तो इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप का भी सिस्टम हमारे देश में बड़ा सुदृढ़ है, जहाँ की बहुत सारे एजुकेशन और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अब इनफॉर्मल सिस्टम से ही होके आता है। उसको हम लोग पहचाने, उसको हम लोग सर्टिफाई करें, उसको हम लोग करें न माने, बट ये सिस्टम बड़ी तेजी से चलता आ रहा है। तभी हम लोग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अप्रेंटिसशिप 1961 के बाद भी बहुत ज्यादा हमारे देश में नहीं बढ़ा, फिर भी वी हैव बीन एबल टू have a good manufacturing base, good service base in the industry, and today manufacturing and service contribute more than 75% of the GDP. इसलिए काफी ये informal apprentice, but अब ये समय आ गया है क्योंकि slowly we are moving in a direction where the world is looking at a more formalized workforce. Work is talking of more labor rights, working conditions, और ऐसे सिस्टम में अगर एक ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हम लोग को बढ़ना और अपना काम जो whatever role India is destined to play at the global scale, I think हम लोग को अपने वर्क प्लेस को भी फॉर्मलाइज करना होगा, और वर्क प्लेस को जब फॉर्मलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, तो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम को भी फॉर्मलाइज करना होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आता है, हाउ डू वी इंश्योर academia and industry linkage that our honorable prime minister has been talking about, which he alluded to today also. इस लिंकेज को कैसे हम लोग और स्ट्रॉन्ग करें ताकि जो हमारे युवा हैं उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, उनको सही कौशल मिले, ताकि वो अपना रोल जो ग्लोबल स्केल पर, नेशनल स्केल पे अपना रोल अदा कर सके। तो फॉर्मलाइज करने के लिए अप्रेंटिसशिप को अगर बढ़ावा देना है तो दिस एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज विल हैव टू गो अ लॉन्ग वे। देन इंडस्ट्री विल आल्सो नीड टू टेक अप्रेंटिसशिप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपना कमिटमेंट के रूप में आगे लेके चलना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को भी ये मानना पड़ेगा कि अप्रेंटिसशिप एक ऐसा माध्यम है जो कि सिर्फ युवाओं को कौशल देने का माध्यम नहीं है, परंतु इंडस्ट्री को अपनी वर्कफोर्स जो कि सही वर्कफोर्स है, जिसमें कि स्किल प्रोडक्टिविटी हाई हो, वैसी वर्कफोर्स तैयार करने का एक अच्छा मौका है। वर्ल्ड ओवर अगर हम लोग देखेंगे जो बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशंस हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सभी का जो टेक्नोलॉजी जो वर्कफोर्स बेस है वो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम से ही उभर के आता है। द बेस्ट ऑफ कंट्रीज आल्सो डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम। इवन सर्विस सेक्टर में देखेंगे, इकोनॉमीज लाइक यूके जहां की सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहां भी जो वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर को फीड करता है वो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम से बढ़ के आता है, और इंडस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। इसलिए अब ये जरूरत है कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्री यूथ इसमें काफी अग्रणी भूमिका निभाए। और जो अप्रेंटिसशिप के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रावधान, मतलब 1961 का जो एक्ट था उसको
14 में पूरी तरह से सरल कर दिया गया, उसको काफी मेजर रिफॉर्म्स किए गए और जो भी इंडस्ट्री की आस थी उसको माना गया। 2019 में जाके रूल्स में भी ऐसे चेंज किए गए ताकि जितना भी सरल बनाया जा सके इस अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम को बनाया गया। आज के दिन जो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम है उसमें अब पूरी तरह टेक्नोलॉजी का यूज, जो नई योजना ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो बजट में अनाउंस हुई है विद 47 लाख बच्चों के लिए स्टाइपेंड की इसमें व्यवस्था की गई है। इसके अगर स्ट्रक्चर को आप देखेंगे पूरी तरह एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे अप्रेंटिसशिप को लाया गया है ताकि इंडस्ट्री का इंटरफेस बच्चों से या सरकार से सीमलेस रहे। इसमें कोई डीप रेगुलेशन नहीं हो, सॉफ्ट टच रेगुलेशन हो। जो शिकायत इंडस्ट्री की रहती थी कि इट्स क्वाइट रेगुलेटरी इन सिस्टम, उसको काफी सरल किया गया है, सॉफ्ट टच रेगुलेशन रहे। सारा काम जो अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। बच्चे का ऑनबोर्डिंग भी ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है। आपको पूरी तरह अपने कोर्स को डिजाइन करने का, जबकि 200 से ज्यादा कोर्स डिजिग्नेटेड ट्रेड में, 400 से ज्यादा कोर्सेज ऑप्शनल ट्रेड्स में ऑलरेडी हैं इकोसिस्टम में, फिर भी क्योंकि हम लोग जब अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग करते हैं, कौशल देते हैं किसी को, तो कल के लिए नहीं देते हैं, फ्यूचर के लिए देते हैं। कौशल ट्रेनिंग, स्किलिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए जब स्किलिंग कर रहे हैं तो इंडस्ट्री कैन डिजाइन ऑन न्यू कोर्सेज जो कि फ्यूचर की तरफ देखते हो, कौशल ऐसे स्किल्स जो कि हमें लगे जिसकी उपयोगिता फ्यूचर में और बढ़ेगी, उस तरह के कोर्सेज को आप डिजाइन कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी भी इस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में दी गई है ताकि आप इंडस्ट्री इसमें अग्रणी भूमिका निभाए, सरकार से इंटरफेस मिनिमम हो, बच्चों को ऑनबोर्ड करे, नए कोर्सेज उसके लिए डिजाइन करे, उनकी ट्रेनिंग करे और इच्छा हो तो उस पर असेसमेंट और सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन तक भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ अभी चेयरमैन महोदय ने बताया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। उसमें एक वोकेशनल का भी पिलर है जिसमें भी क्रेडिट मोबिलिटी की भी व्यवस्था की जा रही है। मेरा अनुमान है और मैं मानता हूं कि भविष्य में अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम भी अगर स्टेबलाइज करेगा और इसमें भी असेसमेंट सर्टिफिकेशन अच्छा होगा, तो इसमें भी जो बच्चे ट्रेंड होंगे, सर्टिफाई होंगे, उसमें भी वो क्रेडिट्स को एक्वायर कर सकेंगे, उसको एक्यूमुलेट कर सकेंगे और उन क्रेडिट्स के बलबूते कल कोई नई डिग्री प्रोग्राम और डिग्री को भी हासिल कर सकेंगे। ये सारे रिफॉर्म्स और व्यवस्था, आई थिंक लैंड हैज बीन पेव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आई थिंक गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द पेव, नाउ इंडस्ट्री नीड्स टू वॉक और युवाओं को इसका उपयोग करना चाहिए। ये जो 47 लाख बच्चों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं सरकार की ओर से एक दिशा है, ये कैटलिस्ट है, एक दिशा दी गई है, पर यह नहीं है कि 47 लाख बच्चों को ही 3 साल में अप्रेंटिसशिप से जोड़ना है। हमारे इंडस्ट्री का पोटेंशियल उससे भी बहुत ज्यादा है। हम 1 करोड़ बच्चों से भी ज्यादा अप्रेंटिस जोड़ सकते हैं। इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है स्टाइपेंड सपोर्ट भारत सरकार से लेनी, बहुत सारी इंडस्ट्री खुद में ये करती आई है। मारुति सुजुकी के महोदय सामने बैठे हैं पैनल पे, वो बताएंगे। आई थिंक मारुति सुजुकी में बहुत ही अच्छा अप्रेंटिसशिप का इकोसिस्टम है जिसमें सालों से वो स्टाइपेंड देते चले आए हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री अच्छा कार्य इसमें कर रही है, उसी कार्य को और आगे बढ़ाना है। और एज ए इंडस्ट्री हमारी क्षमता साल में 15 लाख नहीं 50 लाख अप्रेंटिस को भी हायर करने की है, क्योंकि 15% तक अपने वर्कफोर्स हम अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम से रख सकते हैं। अगर हम लोग उसको पूरी तरह लीवरेज करें और आगे बढ़ाएं तो हमें लगता है कि वी विल बी एबल टू गो ऑन द विजन लेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इस अमृत काल में अपनी अमृत पीढ़ी को हम लोग सही तरीके से तैयार करेंगे। और युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि चेयरमैन महोदय ने बताया, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। एनी स्किल विच यू एक्वायर इज यूजफुल, एंड स्किल को हमेशा आपको अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नई नई स्किल्स को एक्वायर करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं अब वाणिज्य का भी पार्ट हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर, वर्ल्ड ओवर भी ट्रेड में जो हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड में भी सर्विसेज की मात्रा अब धीरे धीरे बढ़ रही है। सर्विसेज में ट्रेड बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी ने अब ये पॉसिबल कर दिया है कि क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ सर्विसेज इंडिया में बैठ के भी आप स्किल को प्रोवाइड कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स में या यूरोप में। आपको कोई आईटी स्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप काम कर रहे हैं, आप उसको यहाँ बैठ के भी प्रोवाइड कर सकते हैं और देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। तो आज के दिन सर्विसेज का एक्सपोर्ट में शेयर भी बढ़ रहा है और अब टेक्नोलॉजी ये इनेबल करती है कि कोई भी स्किल
जिसमें कि एक डिजिटल एलिमेंट है, क्योंकि डिजिटल एलिमेंट आज के दिन हर स्किल में चला आ रहा है। तो डिजिटल एलिमेंट उसको हम लोग अपने घर बैठकर भी, अपने देश में बैठकर भी, विदेश में, पूरे ग्लोबल स्केल पे हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के लिए आई थिंक दिस इज आवर स्ट्रेंथ। युवा हमारे स्ट्रेंथ है और इन युवाओं को सही कौशल से जोड़ने की जिम्मेवारी आई थिंक हम लोग सबके ऊपर है, खासकर इंडस्ट्री के ऊपर है और एकेडमिया के ऊपर है कि जो भी युवा वो स्किल को एक्वायर करे उसको किस तरह से हम लोग कोर्सेज के रूप में सर्टिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें, उनको क्रेडिट एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ने का मार्ग उसके लिए प्रशस्त करें। तो धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, Rajesh Agarwal sir. In fact, your deep insight, because I may take this opportunity कि जब ये स्कीम ड्राफ्ट हो रही थी तो सर का सबसे बड़ा योगदान सर का इस स्कीम को ड्राफ्टिंग में और इस स्कीम को रोल आउट करने में सर का रहा है। इसीलिए सर ने बड़ी डीप इंसाइट हमें दी है। खास तौर पे सर ने जो ये बात कही है कि इंडस्ट्री एज अ स्टेक होल्डर से ही कंसल्टेटिव प्रोसेसेस कई बार किए गए और उनके पास से ही सुझाव मंगा के एक इस एक्ट को रेगुलेटरी एक्ट की जगह सरकार कैसे फैसिलिटेटर बन सकती है उसकी तरह से एक भूमिका करी गई और सरकार ने अब एक रास्ता बना दिया है। और अब हम आह्वान करते हैं इंडस्ट्री से कि इंडस्ट्री कैसे अपने इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएं और किस तरह से अपने कमिटमेंट को साकार करें, जिससे कि यूथ का जो एस्पिरेशन है अप्रेंटिस बनने का, जॉब मार्केट के लिए रेडी होने का, उसको कैसे साकार करें। सो थैंक यू वंस अगेन राजेश सर, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी जिससे जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं उनको भी इससे जरूर बहुत फायदा हुआ होगा। अब मैं वेलकम करना चाहूंगी श्री राहुल भारती जी का। नमस्कार श्री राहुल भारती जी। श्री राहुल भारती is the Executive Director, Corporate Planning and Government Affairs at Maruti Suzuki India Limited. He is also the Chief Investor Relations Officer at Maruti Suzuki. He is serving as the Chairman, International Relations and Trade Policy and Chief Engagement Officer of the Society of Indian Automobile Manufacturers, and also the Chairman for Japan India Institutes of Manufacturing with their presence at Gurgaon, Gandhinagar and Mehsana. So welcome once again Shri Bharti, and let us have the industry input directly from you. Thanks, Ms. Sonal Mishra ji, and thanks such an esteemed panel, Professor Jagdish, Mr. Rajesh Agarwal, former Secretary Shri Njeti Srinivasi, and all the esteemed panel from Maharashtra and ArcelorMittal. First of all, I have to mention that I'm very enthused that I can see small pop-outs from students all over the country. That's a big advantage of having a, connecting the students also to this. So it's not a government industry interaction alone. So very, very nice. And it's obviously digital that can enable it. I strongly agree with Shri Rajesh Agarwal ji. The manufacturing sector is critical for taking India from a developing economy to a developed economy. And if the manufacturing sector has to grow, we have to be globally competitive in cost and in technology. Cost, technology, and quality. Now, if we have, for example, Maruti Suzuki exports to about 100 countries of the world. We export cars, which are a high-tech item, and cars are going through a lot of technology change. The central factor which is responsible for delivering quality is skilled workforce. The people who make the car, they have to have very good skills. Now, on the other hand, we have a great country of immense youth power, let's say emerging from rural background or for modest backgrounds in cities, who have a lot of aspirations, but they don't know how to, connect their aspirations with actual employability. So in this phenomena, skilling and training is where apprenticeship comes in, are very critical bridges. So at least for industry, for a company like Maruti Suzuki, skilling and training is not just a good factor, it is strategic. It is central and strategic to our business.
Therefore, it is a key pillar of our CSR as per the approved board norms as per Ministry of Corporate Affairs. And it is also a central strategic activity in our manufacturing. Therefore, we have, for example, we engage with about more than 50 ITIs in India across 18 states. We are taking ITIs to the next level. We have opened 3 Japan-India Institutes of Manufacturing. And I would welcome this panel to visit our Automotive Center of Excellence in Gandhinagar. It's a world-class center which has real models where students can come and learn visually scaled up models where they can understand with flowcharts or diagrams, etc. In terms, so we benefit or we kind of contribute to about 10,000 students a year through our CSR and engagement with ITIs. In terms of apprenticeship, we take about 4,400 students a year. And our focus always is, see, we talk about youth. This is actually pre-youth. Many of these students become employable at 18, which is teenage. It's even before youth. So there's a huge gap which needs to be bridged. And while we are talking about skilling, we also have to talk about soft skills like safety, for example. Industrial safety is very paramount for a student of this age, 17, 18. Then we have basic English, digital literacy, discipline, health and hygiene, industry practices like a uniform, like biometric attendance, and we have some Japanese practices like a morning exercise, like quality circle meetings where employees have to come together and use, because they are the best position to make innovation in the manufacturing processes. So how to suggest changes in the manufacturing processes through quality circle meetings, etc. So the institutes of manufacturing that we have brought about are an exact replica of what we have, in the actual industry, like a mini vehicle assembly line, like an industrial grade paint booth, a CNC machine, use of technology, simulators, etc. We need to provide these advanced tools to these students to be, to make them really up to date with what industry needs. And here I would like to take a pause and say, it is industry who's the customer of skilling. So it's only industry which can tell what skills it needs. For example, about 10 years ago, our ITIs were teaching carburetors while the car industry had totally 100% switched over to computerized fuel injection systems. So the ITIs were almost 10 years behind. Now things have changed drastically. And thanks to the new legislation and regulatory changes that we have, the DBT, for example, is an excellent tool. As Sri Agarwalji mentioned, the government should have a limited role in supporting skilling and training financially. I think it is industry's job. Having said that, a digital platform on which we have all a database of all apprentices all over the country is of immense value, not just for transferring some amount of subsidy, but for making them cross-country employable. Every industry would like to have some kind of diversity and some kind of cross-country migration to benefit from diversity, and this database will be of tremendous help. So I see the the side benefits as being even bigger than the central benefit of having a cross-country cross flow of trainees and labor, so that both industry can benefit and there would be some equalization of opportunity all across country. The next point that I would like to mention is that the DBT will also have tremendous benefit because it makes
the young boy or girl, I mean, he's a teenager at 17 or 18, both financially literate and bankable. So, you know, if he wants a scholarship in the future, or if he wants to start an entrepreneurship, and in our institutes, by the way, we encourage people to join our companies or even our competitors, but we also encourage them to take up entrepreneurship, and we provide some kind of support also for that. So this kind of financial enabling can help them graduate to entrepreneurship soon early enough in their lives. So opening an account to a young boy or a girl is extremely has a lot of strategic advantages. He starts being financially literate. He starts feeling bankable. He can start he can start, for example, a habit of savings instead of as our parampara says, सारा भोग नहीं, हम तो योग में विश्वास करते हैं. So if they start saving for their entrepreneurship opportunities, or for their families, or for building a house for the family, or for their parents' medical needs, it's an excellent thing. The last point that I wanted to mention is element of respect for skill. I think we have to give a lot of respect to an electrician as almost at the same platform to an electrical engineer. Being an engineer myself, let me tell you, during Diwali, I am not able to efficiently join two wires together so that they don't create spark. I'm not able to do that because it's workmanship, which is a critical skill. Similarly, nurses as compared to doctors, I mean, both are extremely valuable elements of the chain in healthcare. So we have to have element of respect for skill so that they can look up to their jobs with pride. So I'll pause here, and we'll go along the discussion as it comes. These are my few points of submission. Thank you so much, Rahul Bharti ji. In fact, कौशल का सम्मान, ये जो आपने स्वयं बताया है, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जब आप लीड करते हैं, तो मुझे लगता है ये मैसेज जो हजारों बच्चे आज के दिन हमारे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, उनके लिए, और अन्य इंडस्ट्रीज भी जो पूरे हिंदुस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा. और अन्य बातें जो आपने खास तौर पे फोकस की सॉफ्ट स्किल्स के लिए, कि बेसिक डिजिटल एक्सपोजर, बेसिक सेफ्टी एक्सपोजर, ये भी बहुत आवश्यक है. अलाइनमेंट ऑफ ट्रेनिंग विद द जॉब मार्केट रेडीनेस, ये भी आपने उदाहरण की तरह से बताया, खास तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ही उदाहरण से बताया, ये भी बहुत अच्छा मैसेज है. और इंडस्ट्रीज भी, मैं मानती हूँ जो आपने भी सेंटर्स चालू किए हैं, और अन्य कई इंडस्ट्रीज ने फ्लेक्सी एमओयू करके, पीपीपी मॉडल पे आईटीआई के साथ पार्टनरशिप करके, इंक्यूबेशन सेंटर से लेके आर&डी सेंटर से लेके कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए हैं. और जो चेयरमैन सर ने शुरू के उद्बोधन में जो बात कही थी कि इंटर्नशिप के लिए भी ऐसे बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां पे इन लोगों ने इस तरह के सेंटर्स बनाए हैं, और बच्चे उनके इंस्टीट्यूट से भी नजदीक की इंडस्ट्रीज में जाके भी ट्रेनिंग लेते हैं. तो आपने, और इसके अलावा जो आपने डीबीटी के लिए बोला कि ये गेम चेंजर है, जो बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही वो फाइनेंशियली इनेबल्ड बनाएगा, और आगे जाके यही बच्चे केवल वेज एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप करने की भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन है. सो थैंक यू वंस अगेन. एंड नाउ लेट मी टेक द ऑनर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग श्री इंजेटी श्रीनिवास सर, चेयरपर्सन International Financial Services Center Authority, IFSCA, Gift City, Gandhinagar, Gujarat. He is currently heading this maiden institute, and he has been instrumental in pushing through significant reforms in the corporate and finance sectors. Sir has played a pivotal role in decriminalization of various minor procedural and technical offenses under the Companies Act that led to a significant improvement in India's ranking in the ease of doing business. Thank you, sir, for that.
He has been instrumental in pushing through insolvency and bankruptcy code also. We welcome you, sir. And Gift City has been a huge focus in this year's budget as well. So looking into the deep insight coming especially from the financial sectors, आप इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? धन्यवाद धन्यवाद सोनल जी, चेयरपर्सन यूजीसी श्री जगदीश कुमार, my co-panelists and participants, especially the youth. मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। जब सोनल जी ने मेरे से बात किया कि आप भी इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करिए, तो मुझे थोड़ा अचंबा लगा कि गिफ्ट आईएफएससी में एक फाइनेंशियल रेगुलेटर, इस स्किलिंग में मैं क्या बात करूंगा। लेकिन उस पर ध्यान से जब मैंने विचार किया तो ये बहुत ही फार साइटेड एक इनिशिएटिव सोनल का था कि फ्यूचर में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो गिफ्ट सिटी है। अभी इस सेमिनार के दौरान हमें जगदीश कुमार जी ने पॉलिसी पर्सपेक्टिव दिया, अग्रवाल जी ने जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, मैक्रो पर्सपेक्टिव है, उस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, और भारती जी ने इंडस्ट्री के लेवल पे क्या क्या हो सकता है, क्या सिनर्जीज हो सकती है, उसके बारे में बताया। मैं आपको एक इंटरनेशनलाइजेशन जो प्रोसेस चल रही है, भारत की जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस चल रही है, और भारत का जो एस्पिरेशन है कि वो एक दिन सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उसमें फाइनेंस का क्या रोल होगा, उसमें फाइनेंशियल सेंटर का क्या रोल होगा, और उसमें युवाओं को किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, स्किलिंग, ट्रेनिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उस विषयों पे थोड़ा कुछ कहने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले जब हम देखते हैं ये पूरा जो स्किलिंग का इनिशिएटिव है, जैसे कहा गया है, ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है कि, और ये एक विन विन सिचुएशन दोनों इंडस्ट्री के लिए भी और युवाओं के लिए भी है। युवाओं को एक स्किलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बाद में वो हासिल कर सकते हैं, और इंडस्ट्री को एक रेडीमेड स्किल्ड वर्कफोर्स मिल सकता है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर जो हम देखेंगे तो जैसे अग्रवाल जी ने कहा था कि दुनिया में सर्विसेज का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ग्रो कर रहा है। इंडिया में सर्विसेज 50% से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। फाइनेंस एक तरह से देखो, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, गिफ्ट का जो पूरा नाम है वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। मतलब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक मिलाप है। इसको एक साधारण तरीके से अगर कहने की प्रयास करूंगा तो टेक्नोलॉजी एक सर्कुलेशन सिस्टम की तरह है। हमारी जो बॉडी है उसमें पूरी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उसको आप मानिए वो टेक्नोलॉजी है, और फाइनेंस लाइफ ब्लड है, खून है, और जब खून बॉडी के हर पार्ट में जाएगा तो वो नरिशमेंट होगा। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे, फाइनेंस एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। भारत में भी जो हमारा इंक्लूसिव फाइनेंस की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, या हम नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं, इन सब में फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तभी इन्वेस्टमेंट होगा, तभी जॉब क्रिएशन होगा, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और तभी इंक्लूसिवनेस भी आ पाएगा। तो गिफ्ट एक तरह से देखो तो वो फ्यूचर की तरफ देख रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो 2003 में उन्होंने ये कॉन्सेप्चुलाइज किया। इट वाज अहेड ऑफ टाइम्स। 2003 में भारत में एक फिनटेक का कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं था जैसे आज फिनटेक और डिजिटलाइजेशन एक बहुत ही ऑर्डिनरी एवरीवेयर, इट हैज रीच्ड एवरीवेयर, ये उस टाइम पे नहीं था। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे उसको उन्होंने इमेजिन किया कि वो क्या रोल प्ले कर सकता है, और 2014 में ये फिनटेक जो सिटी है इसका शुरुआत हुआ था, और 2019-2020 में
एक यूनिफाइड रेगुलेटर स्थापित किया गया, दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ये अपने में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है कि ये अकेला अथॉरिटी बैंकिंग को, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स, फंड्स, पेंशन, सारे जो सेक्टर्स है उसको रेगुलेट करता है। जो डोमेस्टिक रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई हो, सेबी हो, वो यहाँ पर उसका रेमिट नहीं है। यहाँ पर आईएफएससी ही ये सारे रेगुलेशंस को चलाता है और यहाँ की इंडस्ट्री को डेवलप करता है एक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन की तरह। अब ये सवाल उठता है कि इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन एक देश में कैसे हम कर सकते हैं। अभी अगर आप देखते हो, क्योंकि हमारे कंट्री में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, उसका मतलब रुपी को आप डॉलर में, डॉलर को रुपी में, इस तरह माने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए। इसलिए कई जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और सर्विसेज हम एक्वायर करते थे वो हम बाहर देशों से करते थे, जैसे सिंगापुर हुआ, लंदन हुआ, दुबई हुआ। आज हम चाहते हैं कि वो सारे सर्विसेज जो हम बाहर से हासिल कर रहे हैं वो सारा हम गिफ्ट आईएफएससी से हासिल करें। इतना बड़ा देश जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जब इंटरनेशनलाइज हो रहा है, आप सोचिए कितने सर्विसेज वो एक्वायर करता है। री इंश्योरेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, लीजिंग। अभी आपने देखा कि एक इंडस्ट्री ने, एक ग्रुप ने 470 एरोप्लेन का ऑर्डर दिया है, जो विश्व में सबसे बड़ा ऑर्डर आज तक है। अब ये प्लेनें लीज कहाँ से होंगी? आज ये प्लेन लीज होती हैं ज़्यादातर आयरलैंड से, डबलिन से। कल को अगर ये गुजरात से, गिफ्ट आईएफएससी से लीज होंगी, आप इमेजिन करिए पूरा जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन इंडस्ट्री है वो यहाँ आ सकता है हिंदुस्तान में, गिफ्ट में नहीं, पूरे भारत देश में आ सकता है। कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज उससे हो सकती है। तो संक्षेप में मैं ये कह दूंगा कि हम ये सारे चीज़ें अभी बैंकिंग ये सारे देख रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, लेकिन कई नए चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पर, एक यूनिवर्सिटीज़ का भी जो है एक्सटेंडेड इकोसिस्टम बनाने के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, इसको भी एनेबल किया गया है, और फिनटेक को। तो इससे क्या होता है, कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए, और इनको भी वर्कफोर्स चाहिए। हमारे जो वर्कफोर्स इंटरनेशनलाइज हो सकेगी वो यहाँ से इंटरनेशनलाइज हो सकेगी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक तरह से हम फाइनेंशियल सर्विसेज का नेट एक्सपोर्टर बन सकते हैं। अभी हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपोर्ट है केवल 5 बिलियन है, ये 10 गुना बढ़ सकता है। तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, और मैं ज़रूर ये देखूंगा कि कैसे ये ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, ऑन साइट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ की इंटरनेशनल फाइनेंस में हमारे युवा लोग कैसे भाग ले पाएंगे, फिनटेक में, इनोवेशन में, एक्सेलरेटर द्वारा या और जो मेजर्स के द्वारा कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। इस पे हम लोग पूरा चिंता करके, इंडस्ट्री से भी बात करके कुछ योजना बनाएंगे जिससे ये अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए खुल सकता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, और भी पैनलिस्ट हैं। मैं पुनर्बार सोनल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और मुझे ज़रूर ये कॉन्फिडेंस है कि आपने जो ये फिनटेक और डिजिटलाइजेशन और जो ये सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में जो ये बताया, और इसके साथ ही साथ दी न्यू अपॉर्चुनिटी दैट इज अबाउट द एयरक्राफ्ट लीजिंग, द शिपिंग लीजिंग, and even the collaboration with the foreign university, I think this will go a long way in creating a huge demand and ultimately raising the aspiration of the youth across India to look forward to whatever is upcoming in the Gift City area. So thank you once again, sir. Thanks for the insight. Thank you. I would now take this panel discussion forward. और अभी जैसे हमें सर्विसेज सेक्टर के बारे में पता चला, सर से फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पता चला, अब फिर से हमारे पास आ रही है एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत काफी काम ट्रेनिंग में और स्किलिंग में किया है। तो अब मैं आमंत्रण करती हूँ डॉक्टर विकास चंद्रा जी का। डॉक्टर विकास चंद्रा हेड CSR है आर्सेलर मित्तल निपन स्टील इंडिया लिमिटेड के।
He has substantial work experience in diverse sectors ranging from extractive industries, mining and metals and energy to NGO. तो हमें एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव आपकी सोनल जी and prof and my esteemed co-panel. Namaskar. As our presence and we are into a manufacturing of that manpower. A skilled manpower is a highly important as we treat. So for congratulate the we are taking skill development and entrepreneurship. जुबेर कहाँ है? जुबेर कहाँ है भाई? बाहर कैसे चले जाते हैं लोग? हाँ, Sonalji, he may not be aware that there is a network problem. Vikas ji, you Am I can switch off your video because no, your voice is cracking in between. You can switch off your video possibly, and then Okay. you can speak, please. Yeah, thank you. We have given you messages also. Please check. You can switch off your video. Yes, now you can speak, please. Yeah. So, through our CSI initiatives, we are collaborated with all the local ITIs. So, this is as an industry, when we went into all the local ITIs, we found that the code it requires, as Rajiv sir was also saying, that upgradation of the course curriculum, the practical and the lab setups, the outdated equipments, and so we took up as a supporting these local and strengthening these local ITIs by setting up a center for excellence in with modern equipments. So we have set up a center for excellence in around 4 ITIs. We are going in enhancing our collaboration with the ITIs. Besides that, we have also providing them on-job training in our plant facilities. That we are supporting all the ITIs that we have partnered with, because हमने देखा कि जब वो ट्रेनिंग हो जाता है और जब वो एक्चुअल एक्सपोजर के लिए जाते हैं इंडस्ट्री, जब उनका स्कूल से चाहे ITI पढ़ने के बाद और आपकी आवाज फिर से थोड़ी क्रैक हो रही है विकास जी. आपका हाँ. बाद हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. आप फिर से कहें. ओके. तो अब ठीक है. sorry, maybe because you can rejoin. Yes, rejoin. विकास तो विकास जी, आप अभी हमसे डीलिंक होके आप दोबारा रिजॉइन होइए. तो इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए हम विकास जी से थोड़ी देर बाद अब थोड़ी देर बाद वार्तालाप करेंगे. विकास जी, आप थोड़ी देर बाद अपना वार्तालाप चालू रख सकते हैं. और अब मैं अवकाश लेती हूं और इनवाइट करती हूं श्रीमती मनीषा वर्मा मैडम का. Srimati Manisha Verma is an Indian Administrative Service Officer of the 1993 batch Maharashtra cadre. A graduate in Public
Policy, Law, Governance and Development from Harvard Kennedy School, US, and IDS Sussex in UK. She has contributed to drafting of some of the most transformative laws and policies in India, impacting the marginalized communities especially. Madam, we heartily welcome you in today's panel discussion, and we are very excited to hear the state's view, what the states are, how the states are contributing, and how states are in a way complementing and supplementing the initiatives which are undertaken by the Government of India. So let's have the insights for the youth aspiration, for the apprenticeship, for the internship, and basically making the youth job ready from Srimati Manisha Verma, Madam. Thank you, Sonal, so much for having me here, and a very good noon to all my esteemed co-panelists from the industry, honorable chairperson of this session, Professor Jagdish Kumarji, UGC chairperson, my fellow colleagues from the government, Rajesh Agrawal Sirji, Sonal, because of whom I'm speaking to all of you, and all the fraternity and friends from the skilling ecosystem who have joined online today. So I would just like to show where we stand in Maharashtra, building on the inputs that have been given by the esteemed panelists, giving a overall macro picture. So I will now take you drill down to the operational details of what the state governments are doing and putting it in the context of NAPS as well as deepening of industrial ties for better apprenticeship, not only better apprenticeship, but to leverage the demographic dividend that we keep talking about. Maharashtra has a huge demographic dividend. हमारी करीब 50% पॉपुलेशन जो है लोक संख्या वो युवा वर्ग है. मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगी क्योंकि बहुत ही नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ इंडियन स्टेट्स भी हैं जिनको अंग्रेजी चाहिए, तो स्लाइड्स इंग्लिश में हैं और थोड़े हिंदी भाषी मित्र भी होंगे ऑनलाइन. Maharashtra figures amongst the top states with employable